Hello student, welcome in my YouTube channel, that is a Biology with Deshmukh madam. Okay, today we are talking about the Morgan's experiment. Yes, who is this Morgan? That is a T.H. Morgan. Actually, he was an American biologist and he done one experiment on, that is a Drosophila melanogaster, and he given the linkage and crossing over. Actually, linkage and crossing over, this point already we have taken, but which experiment and how this experiment is done, so we will see. Okay, so this T.H. Morgan, he was an American biologist and he done his experiment on fruit fly, which is also called as Drosophila melanogaster. Yes, listen. Drosophila. What is this Drosophila? Actually, it is a small insect. It is a that is a flies. जो flies रहते in that category. So this insect is involved. So Drosophila melanogaster. So which is also called as a fruit fly. उसे fruit fly भी कहा जाता है. So on this he done his experiment. Okay. So why he selected this Drosophila melanogaster? Listen up. What we are see. अब हम क्या देख रहे हैं? हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जिससे उसने लिंकेज एंड क्रॉसिंग दिया था. So क्या था उसका एक्सपेरिमेंट? So he done his experiment on Drosophila melanogaster, which is also called as a fruit fly. So why he selected the Drosophila? So in that the first reason. So it is easily available in laboratory. Yes, easily available. ये जो है easily available होता है and easily culture in, that is the laboratory. Yes, the first reason. Sometimes the question is asking why. जैसे हमने मेंडल में देखा था, why Mendel selected for his experiment that is a garden pea. Garden pea ही क्यों सेलेक्ट किया था? वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why Morgan selected the Drosophila melanogaster. So in that the first reason is this, that is a melanogaster. It is easily culture in laboratory. Laboratory में easily culture कर सकते हैं क्योंकि it is very small insect. So it is easily available and it is easily culture in the laboratory. After that second reason, their lifespan is very short. इसकी जो lifespan है, it is very short, only about the 2 week. Yes, only about the 2 week. इसकी जो लाइफ स्पैन है बहुत ही कम है, only 2 week इसकी जो है लाइफ स्पैन है. And after that the third reason, so here the reproduction rate is very high. इसका जो reproduction rate होता है वो बिल्कुल बहुत ही high होता है. High reproduction rate. High reproduction rate. And due to these three reasons, so these, that is a Morgan, he select his experiment for this Drosophila melanogaster. समझ में आया? Drosophila क्यों select किया? क्योंकि it is easily cultured in laboratory. It is a very small one, so that's why it is easily cultured in the laboratory. Second one is their lifespan is very small. उसका जो lifespan है बहुत ही कम है, only 2 week. वो 2 week तक ही जिंदा रहता है. So that's why इसके जो हम experiment 2 week में उसका result आता है. So that's why second reason is that is the lifespan is very short. Third reason, high reproductive rate. So their reproduction rate is very high. So due to these three reasons, Morgan selected the Drosophila for his experiment. Okay. So here in this experiment, he selected the 2 species. Okay. In that 2 species, here 2 characters he given. So first one is, that is a yellow body with white eye is crosses with brown body with red eye. Yes, which type of the cross is? यहाँ पे 2 कैरेक्टर कंसीडर किए. First one is yellow body and second one is white eye.
So two character consider means here dihybrid ratio is there. Yes, it is a dihybrid ratio. And like that of the Mendel, here same result is appear. यहाँ पे जो है same result जो है appear हुए थे. क्या था dihybrid cross? Dihybrid cross, the cross between two pure parent in which consisting two contrasting character, so which is called as dihybrid cross. And in that dihybrid cross, here the phenotypic ratio. What is the phenotypic ratio of dihybrid cross? That is the 9:3:1. Yes, याद आ रहा है? ये जो डायहाइब्रिड जो क्रॉस था, उस डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था, क्या था वो? हम यहाँ पे ओनली फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर ही सेम जैसे दैट इज द मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट आए हैं. सो सी हियर द फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1. ओके, हियर दिस 9 and 1, ये जो 9 and 1 है, सो दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. यस, दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. Whereas, so these 3 and 3, so these are the new combination. So in that, so that is Morgan, they explained that, so that is in this chromosome, that is X and Y chromosome, so here more parental combination is occur. Okay, ये इसमें जो है यही TH Morgan ने जो है एक्सप्लेन किया था कि इस जो क्रॉस किया उस क्रॉस में जो है रेशियो 9:3:1 आ गया था, और उसमें जो है parental combination देखिए 9 and 1, that is a 10 combination are parental, and 3 and 3 6, that is the new combination. It means that here the genes which are located on this, that is a chromosome, so they are very tightly close, so that's why here the parental combination is coming. Whereas for this new combination, so in very few cases, so here the separation is takes place, so that's why here the new combination is takes place. So this is the experiment of the Morgan. यही Morgan का जो है एक्सपेरिमेंट था, एंड उसके हिसाब से उसने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जो है वो पॉइंट दिए थे. ओके, सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में जो पॉइंट है दैट इज द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. So देखिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. So in human being how many chromosomes are present? That is the 23 pairs chromosomes are present. Yes, 23 pairs. So out of that 22 pairs, it get control the body character, and which is called as, that is the autosomes. Yes, उसे क्या कहा जाता है? Autosomes. Yes, autosomes कहा जाता है because they get control the body character. 22 pair, so which get control the body character, and due to this, so which is called as, that is autosomes, and remaining one pair it get determine the sex. One pair जो है it get determine the sex, and which is called as sex chromosome. and उसे क्या कहा जाता है? ऑलरेडी जो है हमने ये देखा था, उसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है. यस, so these 22 pair, so these 22 pairs, so which get control the body character, so it get transfer from parent to offspring. Yes, which get transfer from the parent to offspring. So these determination, so which is called as, that is autosomes linked trait, which उसे क्या कहा जाता है? autosomes linked trait. Yes, autosomes linked trait किसे कहा जाता है? So these, that is a 22 pairs which get control the body character, which is called as autosomes. So which is called as autosomes linked trait. And these body character, yes, these body character except the sex, so they get transferred from parent to offspring. Listen what I am talking. What?
एटोसोम लिंक्ड ट्रेट यानी क्या, दिस दैट इज अ बॉडी कैरेक्टर. So 22 pair body characters, so which is called as autosomes linked trait, and these that is a body character except the sex, so it get transferred from parent to offspring, which is called as autosomal inheritance. उसे क्या कहा जाता है, autosomal inheritance कहा जाता है. Yes, it is called as autosomal inheritance. किसे कहा जाता है, so the body character which are transferred from parent to offspring except the sex, except the sex, sex को छोड़ के, one pair को छोड़ के जो body कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, सो विच इज कॉल्ड एज एटोसोमल इनहेरिटेंस. एंड दिस एटोसोमल इनहेरिटेंस इट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव कैरेक्टर. इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी इनहेरिटेड होते हैं एंड रिसेसिव कैरेक्टर भी इनहेरिटेड होते हैं. सो विच आर द दैट इज एटोसोमल इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर, विच आर द एग्जाम्पल. सो इन दैट हियर टू एग्जाम्पल इज गिवन. So autosomal, so here two example, that is a dominant one and here the recessive. So here the example, that is a first example है, that is a widow's peak. विडोज पीक हेयर लाइन किंवा विडोज पीक, उसे विडोज पीक भी कहा जाता है. एंड सेकंड एग्जांपल है हंटिंगटन्स डिसीज. ओके, एंड रिसेसिव के एग्जांपल है, देखिए फिनाइल कीटोयूरिया, PKU, फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया. सेकंड है सिस्टिक फाइब्रोसिस. एंड थर्ड है सिकल सेल एनीमिया. देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, हियर autosomal inheritance. What is the autosomal inheritance? Means here the transfer of body character except the sex from parent to offspring, so which is called as autosomal inheritance. So these autosomal inheritance, so ये जो body character में है उसमें it get influenced by dominant as well as recessive character. So here example is given. First one is widow's peak and second one is Huntington's disease. Whereas in recessive, phenylketonuria, cystic fibrosis and sickle cell anemia. ये क्या है हम देखने वाले. So in that first example, that is a widow's peak. So what is this widow's peak? So see here, actually here, so it is related with the hairline. Our that is a in forehead, whatever may be the hairline. जो हमारे सिर के ऊपर हमारी जो हेयर लाइन होती है, विडोज पीक यानी ये ऐसी वी शेप होती है. देखिए अब आप बोलेंगे ये क्या है. यस, वी शेप. मैं आपको एक फिगर दिखाने वाली हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे. देखिए सो सी ये जो है इस तरह, ये जो ऐसी वी शेप हेयर लाइन होती है, वी शेप हेयर लाइन ऑन अवर फोरहेड, विच इज कॉल्ड एज विडोज पीक. अभी देखिए कोई कोई जो इंसान होते हैं या जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके फोरहेड पे ऐसे वी शेप रहता है. यस, सो विच इज कॉल्ड एज विडोज पीक. और कोई कोई जो लोग रहते हैं उनके ऊपर नहीं रहती, वो सीधा स्ट्रेट हेयर लाइन रहती है. ये जो स्ट्रेट हेयर लाइन रहती है, सो विच इज कॉल्ड एज नो विडोज पीक. यानी सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विडोज पीक एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नो विडोज पीक. समझ में आ रहा है क्या रहता है विडोज पीक? यानी जिनके सर के ऊपर ये ऐसा वी शेप रहता है, सामने से अगर वी शेप आता है, सो विच इज कॉल्ड एज विडोज पीक. एंड हियर सो नो विडोज मीन स्ट्रेट हेयर लाइन. ऐसे अगर सांप हेयर लाइन होगी, ऐसे स्ट्रेट होंगी, सो विच इज कॉल्ड एज नो विडोज पीक. समझ में आ रहा है व्हाट इज
दैट इज अ विडो स्पीक यानी ऐसी ऑन अवर फोरहेड वी शेप्ड हेयर लाइन इज प्रेजेंट. यस, एंड इन दिस वी शेप्ड हेयर लाइन, सो डोमिनेंट इट इज डिनोटेड विद द कैपिटल डब्ल्यू. यस, ऐसी वी शेप रहती है या फिर ये स्ट्रेट रहती है, तो सो डोमिनेंट इट इज डिनोटेड विद द कैपिटल डब्ल्यू. So in that condition, so such widow's peak is present, or in heterozygous condition, capital W, small w. So in that condition also, this that is a condition is present, and in those person, so it is a recessive one. Recessive यानी क्या? अभी यहाँ पे small w आएगा, ठीक है? So in that condition, जो उस पर्सन में जो है स्ट्रेट हेयर लाइन होती है. समझ में आ रहा है क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए अगर बाल झड़ने लगे तो वो बहुत क्लियर दिखता है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट आता है और इधर के पूरे बाल चले जाते हैं. सो ये जो सेंटर का जो वी शेप रहता है, so it is due to the presence of dominant character. Which dominant character is present here? Capital W और either capital W, small w. अगर इंडिविजुअल में या फिर ऑर्गेनिज्म में स्मॉल w ये अगर क्रोमोसोम रहेंगे, सो उनकी हेयर लाइन कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी, उनके ऊपर वी शेप नहीं आएगा. समझ में आए? सो दिस इज द विडो स्पीक. सो ये हंटिंगटन्स डिसीज, एक्चुअली हियर these are related with the brains. In brain, that is the neurons are ruptured, so which is called as Huntington's disease. So it is also dominant character. Okay, so here only one example is given, that is the widow's peak. Widow's peak यानी हमारी जो forehead होते हैं उनके ऊपर जो V shape रहता है, so it is due to the presence of that is a capital W और capital W small w. Okay, अब जिनके straight hair line होते हैं उनके अंदर जो है small w ये जो है क्रोमोसोम रहते हैं. समझ में आया? सो आफ्टर दैट रिसेसिव. अब हम रिसेसिव के बारे में बात करेंगे. ये जो रिसेसिव है उसमें जो एग्जांपल है फिनाइल कीटोयूरिया, हम यहाँ पे देखेंगे अभी. फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया ये जो डिसीज है ये देखने वाले हम अभी. Yes, here the second one is recessive, that is autosomal inheritance. In that the first example is phenylketonuria. So phenylketonuria, so this is a metabolic disorder, and this metabolic disorder it is causes due to the recessive autosomal inheritance. समझ में आ रहा है? ये जो disease है क्यों हो रहा है? Due to the recessive autosomal inheritance. So this is a metabolic disorder, and in this that is a disorder due to the recessive gene. So these phenylalanine hydroxylase enzyme it is not produced. Listen what I am talking. Yes, which enzymes? It is very important point. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So these are very important point. So here phenylalanine hydroxylase enzymes it is not produced. Why they are not produced? Because of the recessive gene. If they are not produced, तो what happened? अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? So this amino acid phenylalanine it is not converted into the triosine. समझ में आ रहा है? अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे अंदर क्या होगा? So ये अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, so ये जो ट्रायोसिन है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा. So it is not converted into the triosine, and it is that is a derivatives of blood as well as cerebrospinal fluid. Yes, cerebrospinal fluid. CSF. What is this cerebrospinal fluid? It is present in the brain. brain में जो fluid रहता है, yes, cerebrospinal fluid जो रहता है वो जो है इससे उसके ऊपर जो है ब्लड के ऊपर एज वेल एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट होता है. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन? दैट इज अ पर्सन्स बिकम मेंटली रिटार्डेड. यस, मेंटली रिटार्डेड यानी क्या? जो जिसे हम मतिमन ऐसे कहते हैं, उस तरह के जो है पर्सन जो है ये इस डिसीज में तैयार होते हैं. समझ में आ रहा है? सो हियर ड्यू टू दिस मेंटली it is affect on mental retardedness, it is affected the mentally retarded persons. Okay, and so इसी वजह से
So here it is very necessary. There is a formation of these enzymes. Which enzyme? That is a phenylalanine hydroxylase enzyme. ये प्रोड्यूस होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा, सो इससे अमाइनो एसिड फिनाइलैनिन इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द ट्रायोसिन. अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा, सो इट इज अफेक्ट ऑन द ब्लड एज वेल एज cerebrospinal fluid, and due to this, that is a persons become mentally retarded. If it is excess in amount, अगर ये जो एंजाइम्स हो ज्यादा हो गया तो क्या होता है? सो इट इज फ्लो इन द यूरिन के इसमें सो जो है वो बह जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोयूरिया. अगर ज्यादा हुआ तो विद द हेल्प ऑफ यूरिन, एक्सेस ऑफ that is these enzymes, it is a flow from this from the urine. So that's why this disease it is called as phenylketonuria. Okay, and sickle cell anemia, already we have seen sickle cell anemia due to the deficiency of oxygen. Here the RBC जो होते हैं, RBC it is a half moon shape, ये हमने पहले ही देखा है. Okay, so these are the example of that is a recessive autosomal inheritance. क्या देखा हमने autosomal inheritance में? Autosomal inheritance, so here 23 pairs are present in the human being. Out of this 22 pair control the body character which is called as autosome, and here one pair which is called as control the sex which is called as sex chromosome. Whereas this that is a autosomes linked trait means here the that is a 22 pair it get control the body character which is called as, and which get transferred from parent to offspring which is called as autosomes linked trait. And these that is the character it get transferred from parent to offspring except the sex which is called as autosomal inheritance. So these autosomal inheritance here the influence with dominant as well as recessive chromosome. So dominant में हमने example देखा widow's peak यानी in our forehead if the V-shaped foreline is present or V-shaped that is a hairline is present, so which is called as that is a widow's peak. अगर V-shape रहता है, अगर हमारे ये जो हमारे बाल रहते हैं अगर ऐसा बीच में V-shape आता है, so which is called as widow's peak. So इसमें जो है widow's peak due to capital W और capital W small w की वजह से होती है, and जिनके straight रहते हैं यहाँ पे अगर V-shape नहीं होगा straight होगा, so it is due to the presence of recessive gene that is small w. Okay, whereas in recessive gene, so recessive autosomal inheritance, so here the example is phenylketonuria. So in that phenylketonuria हमने देखा था, so here actually it is the metabolic disorder, and this metabolic disorder it is causes due to the recessive gene. Yes, it is causes due to the recessive gene. So here phenylalanine hydroxylase enzymes it is not produces due to the recessive gene. If it is not produces, it is not converted, that is amino acid phenylalanine, it is not converted into the triosin. And due to this, what happened? Here it is effect on the blood and cerebrospinal, and due to this persons become the mentally retarded. Okay, and here if the excess of amount of these enzymes, so it is a flow with the help of urine, so that's why here the name is given phenylketonuria. Okay, समझ में आया है? If you have any doubt, any question, please ask me. समझ में आ रहा है? Okay, thank you.